अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी। हाँ आमरीन बेटी, आप इस बैच में आई हैं। दिस इज 5 p.m. योर बैच इज 10 p.m. ओके, इनवाइट। my बेटी, कम कम। Sir, this is my batch. 5:45. इन्ना लिल्लाह। ओके, आई फॉरगॉट, आई एक्सट्रीमली फॉरगॉट। आई थॉट देयर इज अमरीन आल्सो इन 10 सर p.m. मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई. दिस इज माय बैच 5:45 एंड 6 ओके 6:30. ओके ओके ओके। यस। ब्रदर अयाज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बाकी लोग कहाँ हैं? कैमराज ऑन कीजिए अपने अपने, फटाफट फटाफट। शाबाश शाबाश, प्लीज कम ऑन कम ऑन। ब्रदर अयाज, ग्रेट। Good evening, respected teacher and all my dear friends. My name is Ayaz Hassan. Today I am here to express my views on the topic value of English. English is very necessary for us. Without English, we can't succeed in life. I have some example. First of all, we can't get a job in the bank. We can't get a job in CBSE school. Without English, you will harass in your life. If you went to ATM for the withdrawal money, anybody is not inside or outside. ATM display is showing English language. How can you withdraw money for ATM? Because you don't know read English. You don't understand English. So I want to say that English is also very important for our daily needs. That's all. ग्रेट, स्पोक अमेजिंग, क्या बात है। बहुत अच्छा बोले ब्रदर आप। और मिस्टेक उस्टेक नहीं है आपकी बात में, ये अच्छा, मतलब आपने जो तैयारी की है बाबू, बहुत अच्छी की है, माशाल्लाह, गजब। अल्लाह माशाल्लाह। सिदरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयारी थोड़ी करो, लेकिन परफेक्ट वाली करो। इसलिए मैं आपको टॉपिक्स भी वो नहीं दूंगा कि जो आपके सर से ऊपर को गुजरे। छोटे छोटे टॉपिक जिनको आप पहले से जानते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि आप अपनी जो थॉट्स हैं और अपने आइडियाज हैं, ऑलरेडी जब आपके माइंड में वो हिंदी में है तो अंग्रेजी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक आपको नहीं दिया जाएगा कि जिसके बारे में खुद आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है और आपको बोलने को कहा जाए। ठीक है, इंशाल्लाह। प्लीज। My respected teacher and my dear sisters and brothers. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. English is global language. English is the most commonly spoken in the world. The English language has gained great and importance in this era. It is many countries' mother tongue. In this era, the English language in this era, the English language. Sir, nervous, sorry. नहीं बेटे, कोई, यू आर स्पीकिंग ग्रेट, शाबाश शाबाश, कंटिन्यू कंटिन्यू, अरे In बहुत this अच्छी era बात of है। in this era of technology and internet, the English language is very important for every single person. The number of spoken worldwide exceeds 1 billion. We see that the English language is spoken everywhere, like schools, banks, hotels, and hospitals.
and every business companies etc. Those who speaks English gets best jobs and best jobs opportunities. हम्म। So we should English learn very well. Thank you. माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब। सर बहुत अच्छा बोली सर सिद्धराज मैंने बाबू। हाँ बेटे, इनवाइट अभी, चलिए आप बंद मत किया कीजिए, बच्चे कुछ कहा कर। अच्छा बेटी, बहुत अच्छी बोली बच्ची, माशाल्लाह। और जुमले आपने बहुत अच्छे इस्तेमाल किए हैं, गजब। ये तो आज आपको पहली मर्तबा टॉपिक दिया है, इतना अच्छा बोली आप पहली बार में, क्या बात है, गुड़िया आफरीन। Assalamu alaikum, sir, and my all friend. First of all, I would like say thanks to my respected teacher for giving me opportunity to speak today. I have topic on English, importance of English. Why English speaking is important. English speaking is important because there are many public places where we need to use it, such हम्म। as airport, hospitals, and schools. English is an sir बहुत डर लग रहा था शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, बहुत गजब, माशाल्लाह, शाबाश, प्लीज प्लीज। English is an international language. It helps us communicate with people around the world. So, it is used in schools and offices and business. Sorry, sir. बोल रही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा बोली हैं, लेकिन जितना सर भी अभी आपने हो बोला। गया अभी हो गया चलिए चलिए, शाबाश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया आफरीन। ओके, नाउ इनवाइट एमरीन। Assalamu alaikum and good afternoon to all. Today topic is English, importance of English. First thing I am telling to all that English is not hard. It's your mindset. If you are your mindset that English is easy, if you think in English, you can automatically say in English. If you are distracted and if you are distracted and all, you can't make a sentence in English. So I'm too nervous right now, but शाबाश i'm शाबाश। I'm telling अमरीन बहुत words. गजब बच्ची हैं, और ये जब इरादा कर लेंगी किसी चीज का तो करके ही हटती हैं, माशाल्लाह, शाबाश बेटी, ग्रेट। So it's not hard, it easy, it only on your mind. So stay calm and don't get stressed and tell everything. Today topic is important of English is important because of widely used global communications. You can improve your career opportunity. It help you access of information and resources online. Travel and travel and study made easy. Boost your confidence and study English. Speaking English, you can help to get a job and it feel more confident. Thank you. ग्रेट, क्या बात है, गजब। अभी तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आई है आपकी, जब से शुरू की क्लास आपने। अमरीन की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है आज की, क्या बात है। चाय पी लेना बाबू मेरी तरफ से। जी वहीदा आओ। Assalamu alaikum, sir. गुड़िया प्लीज। Uh, Hello, everyone. I'm Wahida, and today's my topic is importance of English. English is one of the most important language spoken around the world. By learning English, we can communicate in this world. It's important to know English for business and communication and knowledge. If you want a good job, then it's important for you to know good English. It is the dominant language on the internet and in technology. It connects us to the world and opens more avenues of knowledge. It makes
our foreign journey easy. So learning English is very useful. Everyone should try to learn and practice English every day. I personally feel English is very important. That's why I'm also learning English with Zakiya sir. Incredible. English language, Okay, English language, Hmm. English language fills our personality with confidence. If you know good English, your respect in the society increases even more. Having said that much, I finish up. Thank you. राइट, क्या बात है, बहुत गजब बोली भाई। वही तो बाबू, Thank बेहतरीन you. परफॉर्मेंस। माशाल्लाह। Thank you. ओके, शाकिर ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। तो सब लोग इतने अच्छे बोल रहे हो भाई, माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ, शाबाश। I am going to about importance of English. English is very important language because of it is spoke. Uh, it is many parts of the world. It helps people connect each others, and it is like a bridge. It connects peoples and culture, different cultures. And most of college and schools and universities teach many subjects in English. That's we can. That's we. If we know English, we can understand matters and books easily. हम्म। That's in it is most language in science and technology and internet field because of it is using most. And a person who knows English, they can got good jobs and opportunities in the field nowadays. And in English used in most of used in marketing fields and many workplaces around the world. If we know English, we can visit everywhere easily, feel for comfortable. Like it's help us actual research and like that. Every matter is available in English. That's we know English, we can easily understand and learn new things like that. That's it. अमेजिंग, बेहतरीन, माशाल्लाह, गजब ब्रदर जैसा शाकिर, क्या बात है। जैसा अदनान, अच्छा बोले बाबू आप। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, प्लीज बाबू। Uh, the English language is very important in today's world. It is spoken by people in many different countries. English um, helps us communicate with people from other cultures. It is the main language um, used for international communication. Most science and technology books are written in this language. It is also the main language of the internet, main language of the media, main language of the business. So knowing the to know the English language helps us get a better education, helps us get a good jobs as well. It allows students to read world famous books and research. Many countries use this language as their first language or their second language. It builds understanding. It builds friendship between nations. So learning English increases confidence in talking to others, and also travel becomes easier when you know English language. The language keeps growing and changing with time. Overall, it connects people. I mean, uh, English language connects people across the world like one big family. So on this, I conclude my talk. So, ग्रेट, इनक्रेडिबल, क्या बात है, बहुत गजब बोले हैं अदनान, जबरदस्त, बड़े इजी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। देखिए, ये जब भी मैं आपको टॉपिक दूंगा,
आप उसमें अपने अल्फाज इस्तेमाल करना, कहीं से उठा के बोलने की कोशिश मत करना। पता है आपको इतने टफ टफ वहां वर्ड्स मिलने, आपको खुद मीनिंग नहीं पता। किसी भी बच्चे से किसी भी लाइन का मीनिंग सुन सकता हूँ, किसी भी। फॉर एग्जाम्पल इसमें आया, नोइंग इंग्लिश इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज टू फाइंड न्यू जॉब। तो ये अगर किसी बच्चे ने बोला है नोइंग इंग्लिश इंक्रीजेज, यानी इंग्लिश का जानना बढ़ाता है किस चीज को? अपॉर्चुनिटीज टू गेट अ गुड जॉब, अच्छी जॉब तलाश करने के मौकों को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपको पता रहना चाहिए आप बोल क्या रहे हो, खाली रटना नहीं है। वैसे ही ये हर बच्चे के लिए जरूरी है। प्लीज ब्रदर आजाद। Good evening, sir. वेरी Good गुड इवनिंग। evening और to all सब, of you. हाँ प्लीज। और हर बच्चा हर एक को सुनिए। सुनने से भी अंग्रेजी आती है बाबू, याद रखना, खाली बोलना ही नहीं है। ठीक है, सुनना भी है आपको। दूसरा देखिए, आपका जो फ्रेंड, आपका जो साथ में रहने वाला बंदा है, वो कितनी एक्यूरेसी से बोल रहा है, कहाँ उसने हल्की फुल्की गड़बड़ सी की, वो सब आपके नॉलेज में, इल्म में रहना चाहिए। प्लीज ब्रदर आजाद। Good evening, sir. Good evening to all of you. Thank you for giving this opportunity to introduce this topic. This topic is English is important for us, and English is a worldwide language. It is used in different sectors like medical sector, education sector, and technology sector, and it is useful for like in a travel and in communication, and also it is useful give confidence to speak and improve our skills and develop our personalities, and it is you and we and uh, and we go to outside. English is important for us, हम्म। and otherwise it is used it is used in different ways, like if any delegation come in India, yeah, India goes to other countries, and every sorry sir, अभी कुछ आ नहीं रहा सर. शाबाश, कोई Hello. बात नहीं, बहुत बढ़िया। ग्रेट, बहुत अच्छा बोले हैं बाबू आप, शाबाश। कोई बात नहीं, पहली बार बोले हो, बहुत अच्छा बोले हो। ग्रेट। चलिए शाबाश। नुसरत प्लीज। नुदरत सॉरी। नुदरत। माइक खोलिए बाबू। ओके नेक्स्ट, फाइजा, आपकी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। इनवाइट फाइजा शेख। सदफ आ जाइए। अस्सलामुअलैकुम सर। सर वाले, मैं कैमरा ऑन ऑफ करके बोलूं? देख के नहीं बोलना लेकिन। अच्छा, ठीक है, ऑन करके ही बोलती हूँ। ओके। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा बेटा सलाम कर रहा है आपको। मेरा बेटा बहुत प्यारा बेटा है, माशाल्लाह। एकदम भाई ठीक, अभी बैठ ओके, अभी बैठ जाओ। हाँ, चुपचाप। Sorry, sir. Assalamu alaikum. Today my topic is important of English. First of all, English is a very beautiful language. If you know English, you can communicate with people easily. If you know English, you can communicate people easily with any all the world anywhere. If you know English, you can teach your kids easily. You can, if you know English, you want a good job. English is a the necessary. If you know English, you if you know English, you can in call center job opportunity get easily, and if you know English, you teach other peoples, and you open your small business English speaking classes like Zakaria sir. And when you speak in English, you look like a very professional and educated. And English language is a
official language in many countries, even India. And you can, if you speak English, uh, when you go when you go in the airport, in a five-star hotel, and anywhere, you can speak English and you can understand very well. uh, that's all, sir. इनक्रेडिबल, गजब बाबू। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी बोली हैं आप, सच में। Thank you, sir. बहुत गजब। देखो बच्ची ने की चीज सोच के बोली है, और बहुत बच्चे। वालेकुम सलाम Thank you, sir. बेटे। मेरा बेटा बहुत प्यारा बेटा है मेरा। मुझे गेम चाहिए। Okay, okay. माशाल्लाह। ओके, नगमा प्लीज। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। And बोलिए। Assalamu alaikum, everyone. I am talking about the English language, important of English language. The English language is very important because it is people speaking all over the countries. It help to from different countries to communicate and and share ideas. English is used. Uh, English is used in education, business, and technology. And now English improve jobs opportunities and all about the global information. Sir, thank you. करेक्ट, मेरा बेटा। गजब बच्ची, बहुत शानदार। क्या पर आज तो बड़ी अच्छी तैयारी से आया हो भाई। आई एम वेरी प्लीज टू लिसन द परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली। माशाल्लाह। नूरी फातिमा गुड़िया। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। English is a global language. Direct बोल दे रहे sir. कोई बात नहीं बेटी। English is a global language. It helps in international communication. Most businesses, technology, and official work use use English as a common language. English is very important to get a good job. English is very important to traveling in foreign countries. English is very important to progressing in the future. English is very important for education. English is very important to communicate other countries. Knowing English knowing English improves confidence and social interaction skills. English is help to career opportunities. English English sorry English skills. Sorry, sir. English is very important for law and necessary documents. It helps to opportunities. Knowing English improve new opportunities in life. Thank you, sir. Great, amazing. Way of talking is absolutely impressive, माशाल्लाह। बच्ची का बोलने का अंदाज भी बहुत गजब है। बहुत बढ़िया बोली मेरी बेटी, शाबाश। तनुजा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई तुम लोग तैयारी से आए हो भाई, माशाल्लाह। बहुत अच्छे Today's बच्चे। topic is the importance of English. English is a very important and useful language. It is spoken and understood in almost every part of the world. Learning English helps us to study, travel, and talk to people from different countries. Most of the books, movies, and information on the internet are in English. It also helps us to get good jobs and good jobs and build our confidence. It connects people globally and makes travel easier. In today's world, English is the key to success and a better future. So we should learn and practice English every day. Thank you, sir. ग्रेट, गजब मेरी बेटी, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई तनुजा, गजब परफॉर्मेंस बाबू, माशाल्लाह। अर्शिया। बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज बेटी अर्शी।
English is very important in our life. If we know English language, we can get a good job and we can get a good marks in exam. And if we know English language, we can understand science and computers and we can other lives. English is very important for studying in big colleges and universities and for talking in foreign countries. English is very important for reading good books and for progressing in the future. It is the global language. It is very helpful language. It is new skills it says new skills and it is very beautiful life. Thank you, sir. ओके ग्रेट बेटी, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अर्शी अच्छा बोल रहे हैं बेटे, आप पहली बार बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। सबा यूसुफ आइए प्लीज। हाँ बच्चों, देख देख के कोई मत पढ़ना बाबू, 2 लाइन बोलना चाहें बगैर देखे बोलना। देख के पढ़ोगे कोई फायदा नहीं, सच में कोई फायदा नहीं। कोई बात नहीं, आज तैयारी नहीं, कल बोल देना, कल भी मौका दूंगा बोलने का, लेकिन देख के मत पढ़ना। जो देख के पढ़ोगे मेरा मकसद जो वो खत्म हो जाएगा बाबू। कोई भी बच्चा हो जिसको याद अगर नहीं है, प्लीज देखना मत, बस इतना याद रखिएगा प्लीज। सबा गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। एक्चुअली कल मैं एब्सेंट थी। अभी 2 4 5 मिनट जो भी बोल सकते हैं बताऊंगी सर। शाबाश। गुड इवनिंग everyone. I am Sabah Yusuf. Today I am going to talk about the importance of English. It is a spoken and understood all over the world. Learning English gives us confidence to speak anywhere. It helps us in our career and job opportunities. Most of the study materials and internet information is in English. By learning English, we can connect with people from different countries. It also improves our opportunity on the way we think. So I believe English is not just a language, it is a skill that helps us grow in life. Thank you so much, sir. ग्रेट। अरे वाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी लाइन लाई बाबू आप निकाल गए, बहुत जोरदार माशाल्लाह। आयशा सिद्दीका। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम। Respected sir and my dear brothers and sisters, I am going to tell you about the importance of English today. English is not just a language; it's a superpower. It's a superpower in today's world. It gives you courage to speak and confidence to stand and strength to shine. If you want to, if you may have many degrees, but if you can't speak English, the world might not listen to you. If you want to, if you can speak English, you can get a better job and can study higher education and less opportunities. And if you want to go to abroad for studies, you can you will have to give English test first, and you will have to pass in it. And if you want to job in a big companies, so you will need English. You will need English there for expressing your ideas. So yes, English has become a powerful tool of success. So yes, so let's learn English, and let's learn English. Let's not fear of it, and love it, and use it for reach our dreams. And because it has become, it is the English not just teaches you the words. It gives you courage and confidence and connection and the voice that the whole world can hear you. And lastly, I thanking you Allah that He blessed me the wonderful English teacher who is not only improving my English and also build my confidence and also improving my accent. Thanking you, sir. Thank you so much. इनक्रेडिबल, गजब परफॉर्मेंस। आज तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आयशा की आज की है, गजब। आई एम वेरी प्लीज टू लिसन बाबू,
बहुत गजब स्टूडेंट हमारी है माशाल्लाह। अच्छा है बहन, बहुत बढ़िया, ऐसी तरक्की करते रहो जिंदगी में। शाबाश। जी उम्मे हानी आइए। हाँ देखो, आपके अपने अल्फाज जो तैयार किए हुए होते हैं ना, वो बताते हैं कि आपके तैयार किए हुए हैं, है ना बाबू? हाँ। शाबाश उम्मे हानी प्लीज। Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir, and everyone. English is a very important language. English is the world language. It is necessary to know English to connect with everyone in this world. And English is a language that keep us connected with the whole world. If you want to get a job, so English is essential. English itself, a very beautiful language. Today, in many school and also college, has required to speak only in English. We must recognize the importance of such a powerful language. English is very important to traveling and such as five-star hotel and etc. Thank you, sir. ग्रेट बेटी, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अच्छा है, गजब बोली हैं आप भी माशाल्लाह, बेहतरीन। मनीषा। हम्म। Okay, sorry, sir. Today topic is importance of English. English is the international language and it is the most popular language to speak in the world, and it is provide very good way how to connect with other ones, and it is very and is and it is so शाबाश, बोलिए बोलिए। and it is चलिए कोई बात नहीं, शाबाश। अगली बार बहुत अच्छे से तैयारी करनी है बेटी है। चलिए कोई बात नहीं। जी हाँ मनीषा की अच्छी बात यह है कि बच्ची अगर चाहती तो देख के पढ़ सकती थी, उनके पास मौका था, लेकिन शायद बच्ची ने देख कर नहीं पढ़ा। जो भी जहन में वो याद किया था उसको बोलने की कोशिश की ईमानदारी के साथ। ये अच्छी चीज है, कैमरा बंद करके तो आदमी को और ईमानदार बनना चाहिए, है ना? शाबाश तस्कीन। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। Today the topic is importance of English. English is one of the most useful language in the world. Millions of people speak it in many different countries and places. Learning English is very helpful because it's used in so many parts of life, like schools, work, travel, internet, technology, and communication. It is very important in education field. It plays a big role in education. Many schools and colleges teach in English, and a lot of books are written in English. If you are able to understand English, you can read, watch, and learn about new ideas from all around the world. English is also important for business and job. If you are able to speak in English, you can work in more places and connect with connect with many different people. शाबाश शाबाश। Nowadays English has become global language, so it has become
it has become necessary to learn for everyone. Jazakallah khair. ग्रेट, क्या बात है, गजब, बहुत अच्छा बोली बाबू तस्कीन, आप बेहतरीन माशाल्लाह जी, शाबाश। वरिया। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। प्लीज, हु इज स्पीकिंग फर्स्ट? Sir, ye. प्लीज। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Respected my favorite teacher Zakaria sir and my all dear friends. Today my topic is importance of English. English is one of the most important language of the world. English keeps us connected with the whole world. English helps us to learn about different cultures. Nowadays, so many schools and colleges order students strictly to speak English only. For businesses and jobs, English is very important. English is a language of science and education. English helps us to see cartoons and stories. English language fills our personality with confidence. English is a language of internet. For traveling or tourism, English language is important. Thank you. इनक्रेडिबल, मेरा बेटा, गजब बच्ची। दूसरे उनको बच्ची को बुलाइए, दूसरी वाली को। Assalamu alaikum. Respected my teacher Zakaria sir and all my dear friends. Today my topic is importance of English. English is an academic, common, European and an amazing language. If you want to read the books of international writers, it is compulsory for you to know English. Media's and God's language is English. Key of modern world and global world is English. English is compulsory for workplaces, businesses, and jobs. English helps us connecting to each other from different countries. Nowadays, English is compulsory for success. Today, English is an educational language and traveling language also. Knowing English makes us feel happy and confident. Thank you. इनक्रेडिबल, गजब बच्ची, क्या बात है, बहुत गजब की परफॉर्मेंस दोनों बच्चों की, माशाल्लाह। अच्छा है, बहुत बढ़िया भाई। डोंट वरी, जिन बच्चों का नंबर नहीं आया है भाई साहब, कल नंबर आएगा, 110% आएगा, ठीक है। लेकिन मैं सच बताऊं आप लोग को, ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। मैं बहुत खुश हूं आप आज आपकी परफॉर्मेंस देख के, जिन बच्चों ने की है, और कल मुझे इससे ज़्यादा खुशी मिलेगी जो बच्चे बचे हैं वो कितनी अच्छी परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह मुझे कल उनसे भी मिलेगी। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमारे, हालांकि मेरे टॉपिक्स देता हूँ ये मैं जब लास्ट मंथ होता है तब देता हूँ, आपका भी सेकंड लास्ट मंथ चल रहा है, अभी से मैंने टॉपिक दिया, पहली बार टॉपिक दिया है आपको। इससे पहले मैंने आज तक कभी कोई टॉपिक ही नहीं दिया था आपको बोलने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार टॉपिक दिया मैंने, उस पर बच्चों ने 100% तैयारी की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा किया, आई एम वेरी प्लीज्ड। अल्लाह आपको स्टार बनाए सब लोग को। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।